स्वागत है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के इस डिस्कशन सीरीज में शुरू होने जा रहा है। बायोलॉजी में सबसे बड़ी डिस्कशन, वही 1-2 मिनट की। चलिए चालू कर लेते हैं। इससे पहले कि सवालों का सिलसिला शुरू हो जाए, प्लीज रिवाइज 7.2 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। रिवाइज कर लिए, चलिए चालू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, द बेसिक टिश्यूज मेंशन्ड above organized to form डैश डैश which in turn associate to form organ system in मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। the next. Such an organization इज इसेंशियल for more efficient and better coordination activities of millions of cells constituting डैश डैश the next. बाहर से आवाज अगर आ रही है तो उसका दिल खोल करके आनंद लें। थैंक यू। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of dash dash cell constituting an organism. The next. Each organ in our body is made of one or more type of tissues. For example, our heart constituting of all dash dash type of tissues, that is epithelial, connective, muscular and neural. Then next, we also notice after some careful study that complexity in organ and organ system display certain discernible trend. This discernible trend is called dash dash trend. The next, you are being introduced to dash dash and dash dash of 3 organisms at a different evolutionary level to show their ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। The next, dash dash refers to a study of form or externally विजिबल फीचर। The next, in the case of plants or microbes, the term dash dash precisely means only this. The next, in case of animals, दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी। the next, the word dash dash conventionally is used for the study of morphology of internal organ in the animals. You are most welcome in the next season of this discussion series of structural organization in animals.